Good morning, respected members and dear students. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Today is one of the most discussed and common topic, GST on canteen or catering service provided by employer to employee. बड़ी बड़ी कंपनीज में कैंटीन एंड केटरिंग होते हैं where employees can have their food. So, क्या इस पे कंपनी को GST चार्ज करना है, एप्लीकेबल है? This is what we are going to discuss today. See, point number one. Point number one, GST on free canteen, free catering service provided by employer to employee. यानी free में दे रहे हैं. क्या इस पे GST applicable है? Let's see. Say a private limited company. It has big canteen in its office. बहुत बड़ा canteen या catering का है. Where employees can have their food. Okay, वहाँ पे जाके order करके employees can have their food. Whatever they have, company is not recovering any amount. Company is providing free canteen food to all its employees. Very good company. But canteen वाला तो free में नहीं देगा. So canteen वाला is raising an invoice of 1 lakh plus 5% GST on company. Now two question comes. Two question. Question number one. ये जो private limited company employees को free canteen food दे रही है, free catering में जो खाना दे रही है, क्या उस पे कंपनी को जीएसटी भरना है? ये वाला फ्री कैंटीन फूड. एंड सेकेंड क्वेश्चन, जो कैंटीन वालों ने इनवॉइस रेस किया 1 लाख प्लस 5% जीएसटी ऑन कंपनी, क्या कंपनी को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑन दिस 5,000 जीएसटी पेड? दिस आर द टू क्वेश्चन. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोविजन. फर्स्ट शेड्यूल 1 के बारे में समझते हैं. सी दिस, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, employer and employee as per explanation to section 15 जो value of supply का है, employer and employee are related persons. Boss and वहाँ पे जो job करता है, those are related persons. And what schedule 1 says? Schedule 1 says supply of goods or services between related person is taxable. They are taxable supply irrespective, चाहे consideration charge किया हो कि ना किया हो. Schedule 1 is saying supply of goods or service between related person. फ्री में भी होना यार, जीएसटी अट्रैक्ट होता है. सो ये जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को फ्री फूड दिया, जीएसटी इज एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल 1. बट देयर इज वन कॉन्ट्ररी व्यू, शेड्यूल 3. व्हाट इज द शेड्यूल 3? सी दिस, एम्प्लॉई as per schedule 3 of the CGST Act, as per schedule 3 of the CGST Act, services by employee to employer in course or in relation to employment shall be non-taxable supply. मतलब employee अगर services देता है अपने employer को, वो जो भी earn करता है, schedule 3 बोलता है it's a non-taxable supply. GST is not applicable. Means what? Employer अगर मुझे salary देता है, perquisite देता है, bonus देता है, whatever I earn in course of employment or in relation to employment, GST is not applicable. Okay, so जो भी मेरे part of CTC है, Schedule 3 बोलता है it's a non-taxable supply. GST is not applicable if it's part of CTC. Okay, so यहाँ पे contrary view आए. Schedule 1 बोल रहा है GST applicable, Schedule 3 बोलता है GST is not applicable. So what do you think, is GST applicable or not? Understand this point. If a private limited company is providing free canteen services to its employees, and if it is written in the employment contract, that free food shall be provided to employee. यानी आपको जब हायर किया उसी में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है that सैलरी के साथ साथ perquisite के साथ साथ फ्री फूड भी मिलेगा. So it is as good as part of CTC. सैलरी की जगह आपको खाना मिल रहा है. So it is as good as part of CTC. GST applicable नहीं होगा if it is part of CTC. But say if it is not part of CTC, then department may argue that schedule 1 is attracted, GST applicable. So this is the right answer. It should be part of employment contract. It will be deemed as part of CTC. GST applicable नहीं होगा. So ये आप लोग अपने ऑफिस में पॉइंट यूज कर सकते हो. Correct. But second question, ये देखो. See, second, what if GST on amount recovered? ये तो free services हमने पढ़ा. But what if GST on amount recovered by employer, यानी employer free में नहीं दे रहा है services, some amount he is recovering from employer, some amount. Example, say a private limited company has canteen in its office.
कैंटीन इज रेजिंग इनवॉइस ऑफ 1 लाख प्लस 5% जीएसटी. एम्प्लॉय जो भी खाना खा रहे हैं कैंटीन कंपनी पे रेज कर रहा है 1 लाख प्लस 5%. And company is recovering. This time it's not free. So company is recovering 40,000 plus GST from employees. So company is paying how much? 1 lakh plus 5%. And company is recovering how much? 40,000 plus GST. बाकी 60,000 company is bearing. Again two question come. ये जो 40,000 रिकवर किया क्या उसको सप्लाई मानेंगे? क्या उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? And second question, क्या company can avail ITC of 5,000 GST paid on canteen service? What do you think? See, as per section 7, this time there is recovery. This is not free supply. So as per section 7, if employer is recovering any amount from employee, then such supply is a taxable supply. ये taxable supply आ जाएगा, GST applicable हो जाएगा. Whenever there is recovery, GST is applicable. It will be deemed as supply of service by employer to employee. And how GST shall be charged? As per Rule 28. यहाँ पे Rule 28 attract हो जाएगा. Valuation कैसे होगा? Open market value of such goods or service, like kind and quality, or cost plus 10%. Wait, I will explain. See this. क्या हुआ था? There was a canteen where employee can have any food, say dosa, idli, pav bhaji, whatever they want to have. Assume market value of such food is 100. Market value अगर कोई employee नहीं कोई और खाना खाता है तो canteen is recovering 100 plus GST. Okay, so canteen for this is raising an invoice of 100 plus GST on company. However, company is recovering only rupees 40. 40% recover कर रहा है. Now what is return? As per Rule 28, even though company is recovering only 40, even though company is recovering only 40 from employees, company shall be liable to pay GST on 100 rupees. पूरे 100 rupees पे GST लगेगा. And ये जो कंपनी ने GST भरा of ₹5 to the canteen, उसका भी input tax credit is blocked under 17(5). So यार ये तो डबल नुकसान. कंपनी जो GST भर रही है कैंटीन वाले को उसका ITC भी नहीं मिलेगा. And company is recovering only 40. Still GST applicable on 100 rupees. So double loss हुआ. So this is the point. When the company is recovering from its employees, GST is applicable and applicable as per Rule 28 on market value. भले concession 40 recover किया, GST लगेगा पूरे 100 rupees. Okay, अब is there a possible solution? इससे कहीं बच सकते हैं? Can we survive this? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आईटीसी भी नहीं मिल रहा है एंड 100 रुपीज पे जीएसटी भी भरना पड़ रहा है, डबल जीएसटी हो रहा है. हाउ टू अवॉइड दिस? इज देयर अ सॉल्यूशन? यस. सी दिस एग्जांपल. से एम्प्लॉयज आर हैविंग फूड इन कैंटीन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सपोज एम्प्लॉयज ने खाना खाया ऑफ रुपीज 100 प्लस जीएसटी. व्हाट इज द सॉल्यूशन? कैंटीन वाला इनवॉइस रेज करेगा 40 ऑन एम्प्लॉयज एंड जो 60 रुपीज है ऑन कंपनी. So कैंटीन वाला इनवॉइस रेज करेगा 40 प्लस जीएसटी ऑन एम्प्लॉइज एंड जो भी डिफरेंस है इट विल रेज 60 प्लस जीएसटी ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. दिस इज एन ऑप्शन. ये एक ऑप्शन है. करेक्ट. सो क्या हो जाएगा? कंपनी विल नॉट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट. यार वो तो गया 60 पे व्हाटएवर जीएसटी इट पे, वो आईटीसी नहीं मिलेगा. बट कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अगेन पे जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बिकॉज कुछ रिकवर नहीं कर रही कंपनी. So this is the solution. ये एक possible solution है. Another solution I will guide you. See, this is a second solution. That employee had food of rupees 100 plus GST. Canteen raised entire invoice of 100 plus GST on employee. पूरा invoice employee के नाम पे कर दी. And employee pay भी कर रहा है. Later on, company reimburse कर देगा 60 rupees to the employees. Now since it is part of CTC, ये reimbursement जो किया, company shall not be required to pay GST. Okay, so these are the two solutions where you can avoid it. You can avoid the GST whenever you recover the amount from employees. You can avoid. Correct. So first case क्या था? Where company was not recovering, it was free. If it's part of CTC, no GST. Second, if company is recovering, then GST says GST shall be applicable and on market value. To avoid this, you can use these two methods. Okay, so I hope this lecture was useful. ऐसे ही मैं sessions बनाते जाऊंगा. Thank you so much each and everyone. Goodbye. Take care.